Okay, so what is a spin orbit coupling? This is a very interesting phenomena you can see into this particular to explain the fine structure of your hydrogen atom or any atom basically. And you will see the beauty of convergence of quantum mechanics to electromagnetic theory. So all the concept will originate from your electromagnetic theory, and that is the classical electromagnetic theory. And finally, you will reach up to the some expression which will be that classical, and then we will make it operator and we will go for the quantum mechanical techniques. So it's a wonderful concept, and obviously the derivation is very interesting. So we should go for that derivation. In spite of that, it is little bit interesting as well as lot of calculation are also there, है ना? देखते हैं कैसे हम समझ सकते हैं. So again we will go for start with the basically Bohr model, and then we will try to see how we can find the spin orbit coupling, that is S dot L. So let's try to go for spin orbit coupling. So what we have according to Bohr model, so this is my electron, and this electron is revolving about proton of the same charge E, and that is positive in nature, and this is going to negative charge. This will be your minus E. So what will be your direction of velocity? I can assume that direction of velocity is something tangential in nature because it is moving in a circular orbit. Now this scenario is visible from point of view of if observer is rest with respect to nucleus. But what we want how each and everything is experienced by electron. So what we will do, we will sit on electron, or we will try to see the all thing from the point of view of electron. So observer को हम कहाँ पर बैठेंगे? We will put on electron. So what will happen? When observer is, or with respect to electron, we will find this proton is revolving in a same circular orbit with a radius r, but in a opposite direction. Clear है ये? So जब आप यहाँ पर देखोगे, so you have, now my condition is, here is my minus E, है ना? So you have this one is minus E, this is your minus E, and what will happen? Your proton will move into opposite direction, isn't it? So your proton will move into opposite direction. So this is your observer, and this will be your radius vector r, you can easily write. Okay, and from there we can use the electromagnetic theory and we can find what is going to happen. Okay, so let us try to go for the whole concept. So going for these all concept, how, and we have this particular, this electron has basically some spin part is also there. So before going to find what will be, how this angular momentum will come into this particular picture, we have to try to understand what is Bohr magneton and how we can get the magnetic moment. Okay, so first we will try to find that how magnetic moment will generate in a some classical orbit. So let's try to go for first Bohr magneton, what is an understanding of Bohr magneton, and then we will try to go for this particular thing. ठीक है, इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे after that. So first thing we are just going to understand what is concept of Bohr magneton. So right now what I am just trying to calculate Bohr magneton for the electron. ठीक है? So what will happen? So the electron is moving. If electron is moving, then it is just revolving, so it will generate a current. है ना? So what is your magnetic moment? So magnetic moment is nothing but current into area.
है ना? Your magnetic moment is nothing but current into area. And if this is your radius r, then this current can be written as charge by time period, and this area is nothing but pi r square. And I can write this time period as e pi r square upon 2 pi r by v. So I can take v there, and what will happen? This r will cancel. So this magnetic moment, and if I will multiply, then this pi is also cancel. If I will multiply mass of electron on the numerator as well as denominator, then what I will get? I will get E mvr upon 2m. Agreed? And this mvr is nothing but what? Angular momentum. So this angular momentum is a vector quantity. So what I can write? I can write this magnetic moment is equal to E upon 2m L. And the beautiful part is that this magnetic moment by L is nothing but one particular constant. That value is E upon 2m. Agreed? So this magnetic moment by L is some constant, and this constant can be rewrite in a form of Bohr magneton. So what will be your Bohr magneton? So this can be written as GL mu b upon h cut, and where GL is known as gyromagnetic ratio, and that will be GL is equal to 1 for electron. I am just talking about the orbital angular momentum. Gyromagnetic ratio तो E upon 2m होता है ना, like electron charge of the electron upon mass of the electron होता है gyromagnetic ratio. ये कैसा है कि landing effect? Landage, sorry, not gyromagnetic ratio. This will be something like Landage factor. Sorry. So this will be Landage factor. So this will be Landage factor, and that is also known as G factor basically. ठीक है? So this is basically G factor. Sorry, मैं gyromagnetic ratio नहीं. This will be something like G factor, and this G factor will also dependent on the internal property or internal symmetry of your electron. So right now you can just assume that this GL is equal to 1. You can also prove this thing from the quantum mechanics later part, but right now we will put GL is equal to 1 for the electron. I am not talking about GS. इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे? GS भी लिखेंगे. And what will be your mu b? What is your mu b? If GL is equal to 1, then mu b is basically E h cut upon 2m. This is one another universal constant which is known as what? Bohr magneton. So this value, and this value has some fixed value. So we can just write that particular value. So चलो I will just give you that number. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. So I will give you later this number. Just currently देखो E h cut upon 2me. I will just give you the correct value. So this will be some constant mu b, है ना? So what will happen? You can write mu L. Mu L क्यों लिख रहे हैं? Because this is due to orbital angular momentum. So this mu L is equal to, you have E upon 2m into L, and that value is equal to GL mu b into L. And now I will introduce the negative sign. Why negative sign? Because this mu L will be in a opposite direction of L for electron. Negative charge है, तो ये क्या रहेगा? उसके opposite sign में रहेगा. So this will be negative, and by h cut is also, है ना? So this value by h cut is also there. By h cut is also there. ठीक है? So what we have? We have magnetic moment due to orbital motion is equal to something negative Landage factor GL, and you have Bohr magneton mu b L upon h cut. So this is our mu L. On to basis of this derivation, hence we know that algebra of angular momentum
and the spin is almost same, the behavior is almost same. So what we can do, we can also define the magnetic moment due to spin of a electron. समझ रहे हो, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एनालॉजी ऑफ दिस वन. देखो जो भी एनालॉजी आपको एंगुलर मोमेंटम के लिए है वो सेम एनालॉजी आप स्पिन के लिए इजिली कर सकते हो. व्हाट विल चेंज? द चेंज विल बी नथिंग बट व्हाट? द क्वांटम नंबर, है ना. सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? सो वी कैन डिफाइन द वैल्यू म्यू एस, and this mu s is equal to minus gs, and mu v will be also there by h cut, and you have s vector. And what will be gs? This is Landé's factor, and this value is equal to 2. And negative sign is again just talking about you have that direction of angular momentum and magnetic moment is just in a opposite direction, but not exactly anti-parallel, but they are in opposite direction. This will all, these are vectors things, so we have to talk about this. Clear hai? Now it's a very interesting, if you will talk about magnitude, then obviously negative sign is not very relevant. The magnitude will be what will be magnitude of mu l? So that value is equal to gl mu b upon h cut l into l plus 1 h cut root under. So this h cut is cancelled. This will be your magnetic moment, the magnitude of magnetic moment. And if you will talk about Lz component, suppose this will be into z direction, then obviously sign will be there, and this will be converted to mh cut. ठीक है? So if you will write this thing for Lz, then what will happen? Suppose mu Lz के बारे में बात कर रहे हो, then sign will be also there, gl, and you have mu b, and this value is equal to mh cut by h cut. So h cut can be cancelled, so you can just use this concept. ठीक है? ये सब के ऊपर problems आते हैं, so you have to just remember all this formula. Okay? So what we have? We have a very interesting phenomena that electron, due to internal symmetry of electron, due to spin degree of freedom of electron, what we have? We have a magnetic moment that will be developed into the electron. This is one very interesting thing. Now come to the last slide. अब यहां तक ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है ये? Everyone is comfortable? Serlin and all other people, are people okay? है ना? This derivation is, why this derivation is important? Because in the atomic physics you will find that very small questions can become, and you have to use all these things. ठीक है? So every derivation is very important. Okay, and another thing is that once you will do the derivation, what you will get? You can easily remember the concept. So this is very important. Now come to this picture. Now what is going to happen? This is my condition from the inertial frame of reference. Means if we are sitting on nucleus, then we will see this kind of situation. But here we want to see what will happen to your electron. What is going to happen to your electron due to motion of this particular proton? And now proton is moving with some velocity. Are you getting my point? So if proton is moving with some velocity, it will develop some magnetic field because it is charged particle, and it has one internal spin. And due to that spin, there is coupling between magnetic field and that spin, and that will split, that will extra term in a Hamiltonian will come into picture. So let us try to go for a next calculation about that spin orbit coupling. अभी तक हमारे पास क्या मिल गया है? For the electron की कहानी क्या है? For the electron, we have mu s, and that mu s is equal to what? Minus mu b gs upon h cut into s. And I will not talk about mu l. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बैठे हैं तो ऑर्बिटल मोशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है.
Are you getting my point or not? But thing is that you are sitting on non-inertial frame now. आप कैसे फ्रेम पर बैठे हुए हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर आप बैठे हुए हो. ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कैलकुलेशन, और इसको हम जरा देखने की कोशिश करते हैं. एंड नाउ यू विल सी हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी विल कम इनटू पिक्चर. यहां तक क्लियर है ये? ओके, नाउ so what is this scenario? The scenario is, here is my electron and there is my proton, okay, and we have electric field on electron due to this particular proton, and that value, that electric field E is equal to E upon 4 pi epsilon naught into R by mod R. E square होता है ना, what will be that value? Z R upon R, R cube, that value is R cube, है ना. वेक्टर के फॉर्म में कूलम्स लॉ लिख रहे हैं, तो इसको मैं इन जनरल लिखूंगा E R upon 4 pi epsilon naught R. So mod R को मैं R लिख रहा हूं, बार बार mod R, R cube, basically this is what R cube. ठीक है? नो, माइनस ही इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं ये डायरेक्शन दे रहा हूं, प्रोटॉन का इसके ऊपर मैं देख रहा हूं, प्रोटॉन के कारण इस पर जो फील्ड लग रहा है ये देख रहा हूं. सो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पॉजिटिव साइन विल बी देयर. ओके, नाउ व्हाट विल बी करंट इनटू दिस करंट डेंसिटी? द करंट डेंसिटी इज नथिंग बट NeV. ठीक है, ये किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के कारण. लेकिन प्रोटॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की क्या है? एग्जैक्टली अपोजिट. सो व्हाट विल हैपन? दिस V कैन बी चेंज टू माइनस V. This V can be changed to what? Minus V. Because velocity of proton will be exactly opposite to velocity of electron. So why? अगर उसको पॉजिटिव मानते हो तो इसको क्या मानोगे? That will be negative sign. So you have J is equal to minus NeV. अगर आप चाहो तो Z भी लगा सकते हो, Z यहां लगा लो, Z यहां लगा लो, so there is not any problem. I am just talking about Z is equal to 1 के लिए बात कर रहा हूं. Now what will be your magnetic field due to some moving charge? In a vector form, due to from the Ampere's law के कारण जो आपकी magnetic field है, that magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi, and what you have? J cross R. If you will write Ampere's law in a vector form, you can write this particular thing, J cross R. So what will happen? I can put J is equal to what? Minus NeV. लिख सकते हैं ना? So this magnetic field is equal to mu naught minus Ne is the scalar quantity, and what I have? V cross R by 4 pi. लिख सकते हो इसे. And what I can do, R नीचे R mod R cube. There is R cube is also there. ठीक है? And R cube is also there. ठीक है? So this will be your magnetic field. जनरेट हो रहा है किसके कारण? Magnetic field is generating due to proton. और किस पॉइंट पर? जहां पर इलेक्ट्रॉन है. So this is the magnetic field at the electron due to proton. ठीक है? And now from here what I can do? I can easily replace R to E. इसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आप हमेशा ही रिलेशनशिप निकाल सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट दिस होल थिंग एज B is equal to, what will be this value? Negative sign is also there, so you have Ne mu naught, और ऊपर क्या ले जाएं? 4 pi epsilon naught R cube is cancel. Yes, हो जाएगा. और नीचे क्या आ जाएगा? 4 pi E. Yes, and what you have? V cross E. ठीक है, देखो तो लिख सकते हैं.
जस्ट मैंने r को यहां से रिप्लेस कर दिया और इसमें पुट कर दिया। 4 pi will cancel, mu naught epsilon naught will give you one beautiful constant, that is 1 upon c square. ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ रखे हो। एंड हियर यू हैव v क्रॉस e, क्लियर है ये? एंड e is also going to cancel out, ठीक है? ठीक है। एंड n यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी बात कर रहे हैं, वी हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो आई कैन पुट n इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। सो एक ही प्रोटॉन है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 होगी। सो व्हाट यू हैव माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन अपॉन, कुछ गड़बड़ किया है क्या? 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड यू हैव व्हाट, v क्रॉस e, यही है ना। एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो? सो व्हाट यू कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एज 1 अपॉन c स्क्वायर v क्रॉस e, ओके, ठीक है। So that value is equal to your v cross, so this is your magnetic field. Now from the Newton's law से आप क्या जानते हो? The force, this force is nothing but minus E into E. इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, that will be electric field into this, ठीक है। And this force can be written as what? Minus del v अपॉन del r, ठीक है ना, माइनस del v अपॉन del r, r बाई r ऐसे लिख सकते हैं। एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस माइनस साइन विल बी रिमेन देयर, एंड व्हाट आई हैव minus E, so minus sign will gone, so I can write my E as a function of potential, and what will be this value? This value is 1 upon E dV upon dr, because we are in general working for the spherical symmetric system के लिए, तो del को आप d कर सकते हो, and what I can write, this value is equal to r by r. So this is my electric field in form of इन जनरल पोटेंशियल। हमने क्या कर लिया, इसको इन जनरल पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दिया। एंड आई थिंक आप क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इसको आप डायरेक्ट भी यूज करते होगे, B इज इक्वल टू V क्रॉस E, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही फंडामेंटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जानते हो, देन यू कैन इजिली राइट दिस B इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन C स्क्वायर V क्रॉस E। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट पेज पर चलें। एनी डाउट ऑनलाइन क्लासेस? एवरीवन ठीक है ना? ओके, सो व्हाट I have basically my magnetic field, this my magnetic field is minus 1 upon C square, that is V cross E. And what is my electric field? Electric field is 1 upon ER dV upon dr, r vector, ठीक है जी। And now look at this beautiful derivation. This V is equal to minus 1 upon C square V cross r will be there, and the scalar part is 1 upon ER dV upon dr, लिख सकते हैं। एंड व्हाट विल हैपन, दिस B इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन EC स्क्वायर R, एंड वी हैव V क्रॉस R dV upon dr. I can multiply M and I can multiply M here, ठीक है। एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट R क्रॉस V. What is angular momentum? Your angular momentum is nothing but R cross
V. So this sign, I can write it R cross V, and this minus sign will be positive. So what I have magnetic field as 1 upon E mc square and 1 upon R dV upon dr into angular momentum. Wow. So what you have angular momentum as a function of, sorry, you have magnetic field as a function of angular momentum. और ये कहां मिल रहा है? ये कहां मिल रहा है? This is due to proton, this is motion of proton on the electron, and electron is inertial frame of non-inertial frame, non-inertial frame. So इस inertial frame से इस non-inertial frame से inertial frame पर जाने के लिए यहां पर थॉमसन आगे करेक्शन भी करेंगे. But before that, let us try to go for next level of calculation. This is very interesting. Clear है ये? Now, when we will go for the next level of calculation, we have interaction energy between spin and magnetic field, and that value is nothing but minus mu s dot L. Sorry, minus mu s dot B, not L. Minus mu s dot B. होगा ना? भाई आप किसी भी चार्ज पार्टिकल में जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है and you will put it into some magnetic field, then obviously there is change in interaction energy, and that interaction energy is equal to what? Minus mu s dot B. And what is value of mu s? The value of mu s, this negative sign is there, and you have minus gs mu b upon h cut into s dot magnetic field B, and B can be written as L. B is a function of L. तो क्या करें सारे आप, so here you can write delta E is equal to minus plus sign is there, GS by H cut, and what will be your mu B? Mu B की वैल्यू बताइए क्या है? E upon 2m into H cut. This is value of mu B. And आपके साथ इसका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या है? 1 upon E mc square, and next constant is 1 upon R dV upon dr. Yes or no? 1 upon R dV upon dr. और बाकी क्या बचा? सिर्फ वेक्टर के टर्म में बच गए. So what will be that term? That term is equal to S dot L. And here you have coupling between spin angular momentum of electron and magnetic field generated due to proton. But thing is that यहां पर हमें थोड़ा करेक्शन करना होगा, उसके बारे में बात करते हैं. That correction is very famously known as, and GS की वैल्यू कितनी होती है? 2. So I will take the GS value as 2. So GS is equal to 2. So what we have? We have delta E. We have delta E, and that delta E is equal to, GS is equal to 2. So 2 and 2 is cancel out. So we have m square c square, E is cancel out, h cut is cancel out, and we have very compact formula. यहाँ के अलावा कुछ दूसरी जगह लिखता हूँ. So what we have basically this value is equal to delta E is equal to, देखो क्या आ रहा है हमारा? 1 upon 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, this 2 will cancel to this ds. So वो you have m square c square, we have a scalar part 1 upon R dV upon dr, and we have vector part, and that vector part is what? S dot, sorry, vector, that's a coupling term, that value is S dot L. This is basically correction. This is basically
ऑन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। किस फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। एंड थॉमसन गिव द नेक्स्ट आइडिया, उन्होंने कहा कि भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप अगर इनर्शियल फ्रेम में जा रहे हो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल थिंग विद हाफ। किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से मल्टीप्लाई करना है। सो ड्यू टू थॉमसन करेक्शन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 m square c square 1/r dv upon dr s dot l. Agreed? So this is your general interaction due to spin and magnetic moment, है ना? Agreed or not? Due to your magnetic field generated due to proton and spin of your electron. ठीक है? सो दिस विल बी द कंप्लीट थिंग, और ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, इसी कारण मैंने ये डायरेक्ट करवाया। एंड फॉर द कूलम पोटेंशियल, यहां पर हमारा पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज माय पोटेंशियल हियर? सो वी हैव डेल्टा E इज इक्वल टू 1/2 m square c square 1/r dv upon dr s dot l, and from there what we have, V is equal to minus E square by 4 pi epsilon naught r. We have to find dV upon dr is nothing but E square 4 pi epsilon naught r square. The negative sign will be positive, है ना? And so everything will be remain positive. So delta E is equal to 1/2 m square c square, and we have E square by 4 pi epsilon naught, and we have r cube and s dot l. सो आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो हो रहा है उसमें आपका चेंज इन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? r⁻³ ओके, सो चेंज इन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू r⁻³ सो दिस इज बेसिकली अ न्यू हैमिल्टोनियन, न्यू परटर्ब टर्म। ये आपका क्या आ गया? न्यू परटर्ब टर्म आ गया, जिसके थ्रू आप अब अगला करेक्शन देखोगे। ठीक है? सो लेट अस ट्राई टू गो फॉर व्हाट विल बी योर दिस पर्टिकुलर s डॉट l, किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी विल जस्ट ट्राई टू सी नेक्स्ट वन। ठीक है? यहां तक क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? सो लेट अस ट्राई टू फाइंड, अब यहां पर देखो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू ls coupling we have new quantum operator j, and that j is equal to what? L plus s. So what will be j square? J square is equal to L square plus s square plus 2 L dot s. ठीक है? And what I have L dot s is equal to j square minus s square L square minus s square by 2. And what will be your quantum number associated to j? Is jmj, and you have a set of quantum number j, mj, and you have l, ml, s, ms. So you can write it in a triple product because they all are, you can write it something like this: j, mj, direct product, l, ml, direct product, s, ms. है ना? And what will happen? You have this particular magnetic field. This is your magnetic field. You have some L vector, you have some S vector, and you have this J vector, and this J vector is going to precise about this particular magnetic field. ठीक है? So due to this particular coupling, this L and S can be written as in form of J, and what is the value of J? The value of J will be between mod of L minus S mod of L plus S. ठीक है? And now here we have some spectroscopic term. अब now you have this particular information. Suppose for L means what? S orbit. Sorry, L is equal to 0 means what? S orbit. L is equal to 1 means what? P orbit.
और L इज इक्वल टू 2 मीन्स व्हाट, D1, है ना। स्मॉल डी, अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी आप यूज करोगे। अब एक से ज्यादा आएगा तो वो कैपिटल में भी आप यूज कर लोगे। ओके, सो दिस विल बी स्मॉल डी। सो दिस आर सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन, इस नोटेशन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, सो हियर यू हैव this particular thing where SPD you will write, and here you will write the value of J. यहां पर क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ J, and here you will write multiplicity, and that value is what, 2s plus 1 in this case. Are you getting my point? अब मैं अगर आपसे कहूं 2s half के लिए इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, what will be interaction energy for 2s half? S का मतलब L is equal to 0. If L is equal to 0, then so let's try to calculate this one. देखिए कैलकुलेट करके, है ना। So what will happen? So you have S dot L की बात कर रहे हैं। What will happen to S dot L? कपलिंग टर्म की क्या वैल्यू होगी for the term 2s half? इसके लिए अगर इस तरह से आपको दे रहा है तो in general it will be small s फॉर द सिंगल पार्टिकल। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, कैपिटल में देखते हैं, दैट इज नॉट बिग इशू। व्हाट इज दिस वैल्यू, J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर बाई 2h कट, सॉरी बाई 2, है ना। एंड दिस कैन बी रिटन एज J इंटू J प्लस 1 माइनस L इंटू L प्लस 1 h कट स्क्वायर, एंड हियर इज ऑल्सो h कट स्क्वायर माइनस S, या 2 देने का मतलब S की वैल्यू क्या है, हाफ, है ना। अगेन यहां पर लिख लो S इंटू S प्लस 1 h कट स्क्वायर बाई 2। नाउ इस जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है इसके लिए क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ L, 0, J की वैल्यू हाफ, S की वैल्यू हाफ। सो व्हाट विल हैपन, S dot L is equal to 0. नहीं? So what will happen for L is equal to 0? The effect of a spin orbit coupling is 0. लिख लो। S में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हो रहा है, so this is a big thing. अब इसको मैं इसलिए आपको अभी बता रहा हूं बिकॉज जब हम फाइनल एनालिसिस करेंगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अभी जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे देन इट विल रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एस ऑर्बिटल। लोग इस पर बात नहीं करते हैं, जस्ट निकल जाते हैं, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस, क्लियर है ये। सो इन जनरल यू विल सी दैट देयर इज नॉट एनी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फॉर L इज इक्वल टू 0, देयर इज नॉट एनी रोल ऑफ दैट, ठीक है, क्लियर है ये। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, जस्ट गो फॉर दिस। व्हाट आई हैव, so you have Hamiltonian, and this Hamiltonian is equal to alpha L dot S, है ना। So what will be energy difference, what will be energy difference between 2p3 by 2 and 2p half, 2p3 by 2 and 2p हाफ के लिए क्या एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। सो क्या करना होगा, व्हाट विल बी एनर्जी डिफरेंस, इसके लिए सेपरेट निकालोगे, इसके लिए सेपरेट निकालोगे, दोनों के लिए L की वैल्यू क्या है, सेम है, S की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो L और S का पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली यू हैव J पार्ट। सो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, J1 के टर्म में लिख ले, J1 प्लस 1 h कट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस J2 प्लस 1 h कट स्क्वायर बाई 2। इन बोथ केस L इज इक्वल टू 0, सॉरी L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू हाफ, है ना। सो बोथ केस L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू हाफ, तो ओनली किसका इफेक्ट रहेगा, J का इफेक्ट रहेगा। पहले वाले में क्या होगा, 3/4, है ना, 3/2 इंटू 5/2 h कट स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 3/2
h cut square and you have 1 by 2. देखो तो कितना रहा, हाँ, डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू. कितना आ रहा है, and alpha is also there, so you can multiply with alpha also there. So alpha by 2 h cut square 15 by 4 minus 3 upon 4. So that value is 12 by 4 na. So that is 3 by 2 alpha h cut square, isn't it? So ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. आ रहा 3 by 2? Yes, you have 3 by 2 h cut square. So this will be your particular energy difference, है ना. अब इसी तरह से ये हाइड्रोजन के लिए हो गया. इसी तरह से अगर आप एनर्जी डिफरेंस हीलियम के लिए करोगे, then what will happen? Then obviously we have some Z part का भी contribution होगा, वो हम देखेंगे later. But अभी we have just derived a beautiful expression, and that expression is due to basically interaction of magnetic field, and that is internal magnetic field of the atom. That is we are not putting it externally. ये एटम की जो क्लासिकल बिहेवियर है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. और नौ चूंकि हम लोगों ने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इनर्शियल नॉन इनर्शियल का हम लोगों ने कंपनसेशन कर लिया है. एंड व्हाट वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन अ इलेक्ट्रॉन, sorry, in an atom due to motion of relative motion of electron and proton, now I can say, and we have a spin quantum number, we have a spinning of electron. Due to that magnetic moment is generated, and whenever any magnetic moment is going to put into magnetic field, there is an interaction, and that interaction leads to what? LS coupling. भाई आप इंटरव्यू में जाओगे तो व्हाट विल बी द बेसिक कॉज ऑफ एलएस कपलिंग, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम और एस एक दूसरे से कपल करता है. दिस इज द आउटकम ऑफ व्हाट? Outcome of you are getting the internal magnetic moment that is going to interact with your spin magnetic moment, and that leads to what? S dot L. But mind it, the beautiful thing is all about this term. ये क्या है? 1/2 m square c square, and this will be your rest mass of electron, so I can put it m naught c square. The beautiful term is dr dv upon dr. So you cannot neglect the electrostatic interaction also. भाई जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो अगर मूव कर रहा है कोई चार्ज, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होगा ही होगा. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो देयर. Are you getting my point? And here we have S dot L. So this is very interesting. So we will take a break, and after the break we will go for the next session where we will do the quantum mechanical technique, and we will find how this can be solved with the quantum mechanical approach. Okay? And again we will go for the perturbation theory and what we are going to use. Yes? So the Bohr seems to be blurred. Is it for me or for others? I cannot say from your side my board is crystal clear. Blur आ रहा है? It is blurred right now? Yes, sir. Yes, sir. Oh. We have one. Okay, we will take a break and after then we will come. Okay? Okay, sir. So